Assalamu alaikum, second year. Welcome to the new class, and this is your computer lecture. First chapter we are going to start today. Uh, as you might have seen the book, some programming is also involved in your second year course, that is programming of C++. First two chapters are theoretical. First one is operating system and the second one is system development life cycle. So let's begin with the first chapter, that is operating system. Those students who are computer students in 9th and 10th as well. So this topic is not new for them. Computer operating system is the very common topic which is discussed in the computer science number of times. But as this is your higher class, last class of your high school and college second year, so according to this, I will discuss something new with you according to the syllabus of your book. So let's begin. First of all, concept of operating system. What is operating system? What is it? इसको हम क्या है क्या operating system? Operating system is the system software. There are two types of software. You might know the difference between the hardware and software. This is the very basic knowledge. Hardware are those components of computer which are which have physical existence, and they can be touched, like monitor, keyboard, mouse. All these are hardware components, and software is that part of the computer which used to run the hardware, Without hardware, we cannot use software, and without software, hardware is of no use. So both are necessary to use computer as a proper working machine, right? There are two types of software. One is application software and other is system software. System software is that software which is directly interact with the hardware components of the computer, which is very close to the computer. Close to the hardware components of the computer, which is the very first thing which we use to run the computer. To run the components of the computer. So the operating system is the system software which is used to make the hardware components of the computer usable. These are the hardware components of the computer. These are hardware components of the computer. This is monitor, this is printer, mouse, keyboard, CPU, and these are the applications shown here. All these are controlled by the operating system. Operating system manages working of whole these devices. Application, either that is system software, either that is hardware, either that is software. All the working of these are managed by the operating system. So you can say that operating system is the manager of the computer. Then hardware resources and application programs, all these are managed by operating system. You can also say that hardware
operating system is an interface between the hardware resources and application program, or it is an interface between the computer and the user. Computer and the user, right? So what is the concept of the operating system? It is like that computer system is nothing without operating system. We cannot use computer without a proper working operating system. Now, definition of the operating system, formal definition of operating system according to your book is a program that controls the execution of application programs and acts as an interface between the user of the computer and the computer hardware is called operating system. I told you that operating system is an interface between the computer user and the hardware of the computer. What is an interface? Interface is the thing जो आपको ज्वाइन करता है, मिलाता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दरमियान में ना हो तो आप एक जो कंप्यूटर का यूज़र है वो कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता. ना कंप्यूटर को आपकी बात समझ आए ना आपको कंप्यूटर की बात समझ आए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दरमियान में ना हो. ठीक है. Try to grab the concept of the operating system. जितनी अच्छी आपको समझ आएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है उतना अच्छा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. I do not recommend cramming. मैं ये नहीं कहती कि आप इसको वर्ड टू वर्ड याद करें, लेकिन आपको अपनी बुक को फॉलो करना है. और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं. So there are some tasks of operating system. जो कुछ टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आपकी बुक में डिफाइन है वो क्या है, इनको वन बाय वन देखते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज loads of application system software into main memory and executes it. What is the main memory? If you remember in previous classes we have studied that the main memory of the computer is the RAM, random access memory, right? Primary memory is what? RAM. So सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सबसे पहले ये मेन मेमोरी के ऊपर जाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. सबसे पहले जो भी हमारा प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी पे जाता है, वो रैम पे जाता है. रैम इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर. अगर रैम पे कोई प्रोग्राम लोड नहीं होगा तो वो वर्केबल नहीं होगा. सबसे पहले आपका कोई भी प्रोग्राम है वो रैम पे, मेन मेमोरी पे लोड होता है. तो उसको कौन लोड करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज Next thing is controls the operation of main memory and external storage devices. आपकी मेन मेमोरी रैम जो आपकी एक वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है उसके सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करना. और जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, व्हाट आर द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क, USB flash drive. If you use CD drive then that is also a storage device. So all these are controlled by the operating system. It manages files and folders on storage devices such as hard disk, USB, flash drive, etc. आप देखें कि आपके कंप्यूटर पे आप जब कोई फाइल सेव करते हैं
तो वो एक मैनेजेबल तरीके से एक फोल्डर में जाके सेव हो जाती है। आपको नेक्स्ट टाइम आपको वो फाइल उसी फोल्डर में मिलेगी इफ देयर इज नो एनी प्रॉब्लम ऑफ वायरस एंड एनीथिंग एल्स, उसी जगह मिलेगी। तो ये कौन रखता है उसको उस जगह? ये कैसे, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इसको इसी जगह रखना है और ये यहाँ ही रखी गई थी? इसको कौन करता है? इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कभी ऐसे नहीं हुआ कि अगर हमने माउस से इनपुट दी है तो माउस के बजाय वो चली गई है कीबोर्ड से इनपुट? ऐसे तो कभी नहीं हुआ। जो हमने इनपुट देनी है वो अगर हमने माउस से देनी है तो वो माउस की इनपुट जाएगी, अगर वो कीबोर्ड से देनी है तो कीबोर्ड से जाएगी, अगर हमने स्कैनर से इनपुट दी है तो स्कैनर से जाएगी, अगर हमें आउटपुट प्रिंटर से चाहिए तो वो प्रिंटर से ही आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को, इनके ऑपरेशंस को कौन मैनेज करता है? इनके ऑपरेशंस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे पता होता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस से आई है और कौन से आउटपुट डिवाइस पे जानी है। ठीक है। अच्छा, allow multitasking to handle several tasks at the same time, such as spreadsheet software and a word processor simultaneously. If you open both things, word processor, Microsoft Word और spreadsheet software आप इकट्ठे ओपन कर लेते हैं, उनका काम कभी मिक्सअप नहीं होता। आप दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये इनको भी कौन मैनेज करता है? ये मल्टीटास्किंग होती है। आप दो डिफरेंट काम अगर एक साथ करें, इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये कौन कर रहा है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अच्छा, performs network operations which enable a number of users to communicate with each other in a network environment and share computer resources such as memory, hard disk, printer, internet. नेटवर्क की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। All computers in the world are connected with each other, right? While with internet you can access any computer in the world, but here we are also talking about the internet of your office, of your lab, whatever. अगर आपका एक नेटवर्क बना हुआ है तो आप एक प्रिंटर को आप एक 10-15 जितने भी आपके लैब के कंप्यूटर है उन सब के साथ एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके, आप बजाय इसके कि हर प्रिंट कंप्यूटर के साथ अलहदा प्रिंटर अटैच करें, आप एक ही प्रिंटर के साथ सारा काम कर लेते हैं। तो ये इस सारे नेटवर्क ऑपरेशन को डील भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर्स। अगर कहीं पे आपके आप जब कंप्यूटर को स्टार्टअप करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आपका माउस काम नहीं कर रहा, तो वो सबसे पहले आपको डिटेक्ट करके देगा कि आपकी कंप्यूटर की ये चीज़ काम नहीं कर रही। ये कौन चेक करता है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के तो अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यू मस्ट नो ऑल अबाउट द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर मैक ओएस, जो लोग आईफोन के यूज़र हैं उन्हें पता है मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फॉर द एप्पल hardware. Then Unix, it's also a operating system different from Windows, but it is also have a graphical user interface. First of all, let's discuss disk operating system. What is disk operating system? Disk operating system was the first operating system, right? It was as it is an operating system, so it is a system software. It manages all computer resources, as I have discussed earlier that the task of operating system is to manage all computer resources. Computer resources include
all devices or peripheral devices which are computer, which are attached with the computer, right? All those devices which are attached with the computer are called computer resources. All these are managed by the operating system, and here we are talking about the disk operating system. It was designed by the IBM, very famous organization in the computer world, International Business Machine. It was designed by the IBM and it was very famous till mid 1990s. उसके बाद जब मिड 1990s के बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनमें विंडोज़ थी, लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड। अब जो आप सब जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर आपका एक है ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉयड है, जो कि स्मार्टफोन्स में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होता है। सो इट वाज वेरी फेमस टिल 1990s। उसके बाद ये रिप्लेस हो गया। इसको रिप्लेस करने की क्या वजूहत थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मींस इसको एट अ टाइम एक यूज़र यूज़ कर सकता था। जैसे अब है ना कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट बन जाते हैं और एक से ज़्यादा यूज़र उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं था, ये सिर्फ एक यूज़र इसको एट अ टाइम यूज़ कर सकता था। इट वॉज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें नेटवर्किंग फीचर नहीं थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क के फीचर्स को डील करता है और इंटरनेट को डील करता है। इसके अंदर नेटवर्किंग फीचर्स नहीं थे। अगर आप एक्सटर्नली कोई और सॉफ्टवेयर ला के इसके अंदर इंस्टॉल करते तो वो नेटवर्किंग फीचर्स देता था, लेकिन इसके अपने बिल्ट इन नेटवर्किंग फीचर्स नहीं थे। इसके फंक्शंस क्या थे? इसके फंक्शंस में क्या था कि ये कंट्रोल करता था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, कंट्रोल करता था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर्स के अंदर और आउटपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाता है? कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, ठीक है, माइक आ जाता है। और जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनमें प्रिंटर आ जाता है, प्रिंटर है, आपका मॉनिटर है, ठीक है, स्पीकर्स हैं, ये सब कौन मैनेज करता था? फंक्शन किस कौन करता था? कंट्रोल करता था इनको डॉस। ठीक है, डॉस क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारे पास। फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट करता था यूज़र प्रोग्राम्स को। जितने भी हमारे पास यूज़र्स के प्रोग्राम होते थे, जो भी यूज़र उसके ऊपर काम करता था, वो सब उसको एग्जीक्यूट कौन करता था? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता था। उसके बाद जितने भी हमारे सिस्टम रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज मैंने अभी आपके साथ डिफाइन किया। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो एक्सटर्नली, आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। जो भी इसके साथ इसको वर्किंग सिस्टम बनाती हैं वो सब क्या होती हैं? इसकी रिसोर्सेज होती हैं। ऑल दीज रिसोर्सेज वर मैनेज्ड बाय द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में क्या आता था? मेमोरी में आता था आपके हार्ड डिस्क है, रैम है, अगर उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी। इन सब मेमोरीज को, जो डाटा फ्लॉपी का है वो फ्लॉपी में सेव हो, जो हार्ड डिस्क का है वो हार्ड डिस्क में सेव हो, जो उसका है सीडी का है वो सीडी में सेव हो, ये सब कौन मैनेज करता था? ये डॉस मैनेज करता था। सो इट वाज एन एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दैट टाइम।
लेकिन इसको चेंज करने की जो वजूहात थी उनमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसके जो इंटरफेस था वो कमांड लाइन इंटरफेस था, और कमांड लाइन इंटरफेस की सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि ये इसके ऊपर हमें फुल, जैसे अब आप कौन सा इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, अब आप यूज़ करते हैं ग्राफिकल इंटरफेस। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कौन सा यूज़ करते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका क्या है, इसका कलर्ड इंटरफेस है, इसमें माउस यूज़ होता है, ठीक है। आप पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू, अब तो खैर टच स्क्रीन है, सब कुछ आप टच के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन आप जो एक कॉमन में एग्जांपल दूं तो आप माउस के थ्रू काम करते हैं। लेकिन जो कमांड लाइन इंटरफेस था, जो कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास था, उसमें क्या था कि हमें एक पूरी कमांड हमें याद करनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद हम उसको टाइप करते थे, और हमने जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो होता था। अब तो आपने एक क्लिक प्रेस की और आपने फोल्डर ओपन कर लिया, या एक क्लिक प्रेस किया तो आपकी फाइल ओपन होगी, लेकिन इन द डॉस यू हैव टू राइट अ फुल लाइन, एक पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी, तब आपका इंटरफेस, आपके जो डॉस है, जो आपकी जो फाइल आपने ओपन करनी है वो होती थी। So that was a difficult task to remember all those commands and all those uh, lines and all those things and to type them. Although for this, as all those students who know somehow of concept of system programming, that when you want to build a system for an organization, the best programming and the best way to build a system is through command line interface. आज भी command line interface is the strongest way to build a system, but it is not recommended in the most of the thing because it's difficult to remember. होता ये था कि अगर ये DOS होता आज तक, तो जितनी आसानी से इंटरनेट जो है वो दुनिया पे उसने अब हुकूमत कर रहा है, it was not easy for that. इतना ज़्यादा आम ना होता इंटरनेट, या इतना ज़्यादा कंप्यूटर आम ना होता, इतने ज़्यादा लोग इसको यूज़ ना कर रहे होते अगर कमांड लाइन इंटरफेस होता, बिकॉज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द डॉस वाज इट्स command line interface. Remembering all those commands for doing your work was very difficult task, whereas in the graphical user interface, it's very easy to do your daily tasks and you do your work, right? So in the commonly used operating system, which is the second topic of your chapter, it was the first operating system, DOS, which we discussed today. In the next lecture, inshallah, we will talk about the Windows operating system and the Mac OS and Unix. Three different operating systems are left in the topic, so we will discuss them in the next lecture. Till then, it's over for the first lecture, but I recommend you to study it from your book and find any difficulty. If there is any difficulty in it, then kindly ask from me. Thank you.